Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you will be fine and enjoying good health. I also hope that all of you are offering your prayers regularly and keeping fasts also and taking much care of yourself and also following SOPs. Bismillahirrahmanirrahim. Now come to our today's lesson. Today we are going to read point number 5 on page number 64. First of all, we discuss the meanings of difficult words. It's your homework also. Numerous, लातादाद. Numerous, लातादाद. Challenges, चैलेंजों या आजमाइशों. Dynamic, मुतहर्रिक. Leadership, क़यादत. Leadership, क़यादत. Motto, मक़ूला. Overcome, काबू पाना. Faith, ईमान. Unity, इत्तेहाद. Discipline, तंजीम. Bound to succeed, यकीनन कामयाब होंगे, यानी कि हम ज़रूर कामयाब होंगे. ठीक है. It's your homework and there is a while reading question, answer of a while reading question also. We will note it when we read the points. Now come to the translation of the point. Today, आज the Qaid's Pakistan, कायद आज़म का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान is facing, सामना कर रहा है, numerous challenges, बहुत सारे चैलेंजों का, बहुत सारी आजमाइशों का. न्यूमरस, लातादाद. आज कायद का पाकिस्तान लातादाद आजमाइशों का, चैलेंजों का सामना कर रहा है. वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं. हाउ मच स्ट्रगल, कितनी ज़्यादा जदोजहद, कितनी ज़्यादा कोशिश मुस्लिम हैड मेड, मुसलमानों ने की. अंडर द डायनामिक लीडरशिप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत के तहत. हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत के तहत कितनी ज़्यादा कोशिश की, कितनी ज़्यादा जदोजहद की. वी कैन ओवरकम, हम काबू पा सकते हैं. आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हमारी आज की मुश्किलात पर, हम हमारी आज की मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. बाय फॉलोइंग, पैरवी करते हुए, अमल पैरा होते हुए. द कायद्स गोल्डन मोटो, कायद का सुनहरी उसूल, सुनहरी मकूला. फेथ, ईमान. यूनिटी, इत्तेहाद. एंड डिसिप्लिन, और तंजीम. ईमान, इत्तेहाद और तंजीम. हम कायद के सुनहरी मकूले, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होकर हमारी आज की मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. वी कैन मेक, हम बना सकते हैं. आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हमारी कौम को मजबूत. बाय रिमेंबरिंग, याद करते हुए. हिज एडवाइस, उनकी नसीहत. हिज एडवाइस, किनकी? कायद आज़म की नसीहत, उनकी नसीहत. टू द यूथ, नौजवानों को उनकी नसीहत को याद करते हुए हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. इट इज़ नाउ अप टू यू, अब ये आप पर है. टू वर्क एंड वर्क, कि काम और काम. एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम यकीनन कामयाब होंगे. यानी कायद आज़म ने नौजवानों को क्या नसीहत की थी कि ये अब आप पर है कि काम और हम यकीनन कामयाब होंगे. ठीक है. राइट डाउन द डेट. टुडे इज़ 11th May. Today is 11th May. There is a while reading question. What is the result of neglecting the advice of the Qaid? What is the result of neglecting the advice of the Qaid? Here is the answer. We are disunited. We are divided into sects and groups. We are disunited. We are divided into sects and groups. This is the answer of the while reading question. The theme of this unit is, the theme is national pride and the role of hero in the arts of nation building. इसका थीम क्या है? हमारी नेशनल प्राइड है और एक हीरो का किरदार है किसी कौम की तामीर करने में, किसी कौम को तामीर करने में. आवर ग्रेट लीडर कायद आज़म वॉज प्रोफाउंडली कंसर्न्ड
فار ہز نیشن ایز ویل ایز فار پاکستان. ہمارے جو لیڈر تھے وہ شدت سے فکر مند تھے اپنی قوم اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے. ہز گول واز ناٹ اونلی دا اچیومنٹ آف پاکستان. ان کا مقصد صرف پاکستان حاصل کرنا نہیں تھا بٹ ٹو اسٹیبلائز دا نیشن. بس لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ قوم کو مضبوط کریں اینڈ دا اسٹیٹ سملٹینیسلی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی. فار دا اکمپلشمنٹ آف دس مشن, اس کام کی تکمیل کے لیے ہی انڈر ٹوک کنٹری وائڈ ٹورس. انہوں نے جو ہے وہ ملک بھر کے دورے کیے ایٹ دا کاسٹ آف ہز ہیلتھ, اور اس کا نقصان کس کو ہوا, ان کی صحت کو ہوا. ہی اسٹرائیوڈ فار دا یونٹی آف دا میسز اینڈ دا ویلفیئر آف پاکستان اینڈ اٹس پیپل. انہوں نے کوششیں کی اپنے عوام کی یونٹی اتحاد کے لیے اور پاکستان کی فلاح اور اس کے لوگوں کی فلاح کے لیے. ٹھیک ہے, دس از دا تھیم آف دا یونٹ دا قائد's ویژن اینڈ پاکستان. Today our unit is complete, so you have to revise the whole chapter today and also note down on the homework and send the notes. Take much care of yourself. Fi amanillah.